गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने बोला है कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो है उनको पहली प्रायोरिटी दी जाती है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर। और लगभग 60% जो लोन्स अभी तक दिए गए हैं वो विमेन एंटरप्रेन्योर्स को ही दिए गए हैं इस योजना के अंदर। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं उनको लोन दिए जाते हैं 2015 से। और लगभग 10 लाख तक का लोन जो है वो मैक्सिमम इनको दिया जा सकता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंक्स, एनबीएफसीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, इनके थ्रू जो है ये नॉन कॉरपोरेट स्मॉल बिजनेस सेक्टर को फंडिंग दी जाती है। और इन लोन्स को जो है वो अलग अलग तरह से क्लासीफाई किया गया है। अगर 50,000 तक का लोन दिया जा रहा है तो उसको शिशु लोन कहेंगे। 50,000 से 5 लाख तक का लोन है तो उसको किशोर लोन कहेंगे। फिर अगर 5 लाख से 10 लाख तक का लोन है तो उसको तरुण लोन्स कहा जाता है। अब स्टेट लेवल पर एसएलबीसी जो है वो इसकी मॉनिटरिंग करता है। नेशनल लेवल पर मुद्रा या फिर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज देखता है कि ये लोन या फिर स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है। कोई भी इंडियन सिटीजन जिसके पास एक बिजनेस प्लान है नॉन फार्म इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी करने का, वो इस लोन को लिए अप्लाई कर सकता है, प्रोवाइडेड उसने कभी किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कभी डिफॉल्ट ना किया हो। अब बेनिफिट्स क्या है इसमें? कोई कोलेटरल नहीं देना पड़ता, इजीली अवेलेबल होता है ये, एनीवेयर इन इंडिया आप एंटरप्राइजेस सेटअप कर सकते हो। अगर आप डिफ़ॉल्ट कर देते हो लीगली, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने जानबूझकर जो है वो पैसा नहीं दिया, लीगली अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हो किसी अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसिस की वजह से, तो गवर्नमेंट जो है वो आपका लोन जो है वो रीपे करती है। एक तरह से माइक्रो साइज्ड एंटरप्राइजेस को एफर्टलेस मैनर में क्विक कैपिटल जो है वो प्रोवाइड की जाती है। विमेन एंटरप्रेन्योर्स को जो है वो खासकर स्पेशल कंसेशनल बेनिफिट्स और दिए जाते हैं मुद्रा स्कीम के अंदर। और प्रीपेमेंट का भी जो शेड्यूल होता है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। अगर हम अचीवमेंट देखें तो 40.82 करोड़ टोटल लोन्स अभी तक दिए जा चुके हैं 23.2 लाख करोड़ के, जब से ये स्कीम लॉन्च हुई है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गवर्नर्स राइट टू विदहोल्ड असेंट। ये टॉपिक आपके पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो तमिलनाडु के गवर्नर आर एन रवि का जो डिसीजन है टू विदहोल्ड असेंट फॉर 10 पेंडिंग बिल्स, उसकी वजह से जो है वो पावर्स ऑफ गवर्नर के ऊपर एक दोबारा से लीगल क्वेश्चंस आ गए हैं। तो 163 आर्टिकल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि गवर्नर के पास जो है वो कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो आर्टिकल 200 कहता है कि असेंट टू बिल्स की जो पावर है वो गवर्नर की इसी जो है वो आर्टिकल में मेंशन है। तो जब भी कोई बिल पास किया जाता है लेजिस्लेचर में, तो गवर्नर के पास 4 ऑप्शन होते हैं। पहला तो क्या तो उस बिल को असेंट ग्रांट कर दे, दूसरा उस बिल को विदहोल्ड कर ले असेंट, ठीक है, तीसरा रिटर्न कर दें बिल्स को रिकंसिडरेशन के लिए, या फिर चौथा जो होता है वो होता है कि प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए वो बिल को रिजर्व कर लिया जाता है। आर्टिकल 200 ये कहता है कि अप्रूव करो बिल को, रिजेक्ट करो मतलब विदहोल्ड करो असेंट, या फिर उसको मतलब प्रेसिडेंट को रिकंसिडरेशन के लिए दे दो। और गवर्नर को एज सून एज पॉसिबल, अब ये देखो यहीं पर है जो है सारा जो है वो खेल खराब होता है। जहाँ पर जो है वर्ड लिख दिया गया है एज सून एज पॉसिबल, जो है वो बिल्स को रिटर्न करना पड़ता है अदर देन मनी बिल्स को, ताकि जो है वो हाउस रिकंसिडर कर सके, ठीक है। तो अब ये एज सून एज पॉसिबल की क्या डेफिनेशन हुई? कोई टाइमलाइन तो फिक्स नहीं है, तो इसलिए क्या होता है गवर्नर जो है वो कई बार बहुत लंबे टाइम तक बिल को अपने पास रखे रहते हैं। गवर्नर को जो है इस एम्बिग्यूटी को जो है एक्सप्लॉइट करते हुए देखा गया है कई गवर्नर्स को, और स्टेट लेजिस्लेचर को वो रिटर्न नहीं करते हैं बिल रिकंसिडर करने के लिए। तो एक तरह से अगर आप मानो तो ये एक तरह से पैरालाइज कर देते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट को, और असेंट जो है वो रोक कर, और इस डिस्क्रिशन को आर्बिट्ररीली भी यूज़ किया जा पाता है जा सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि आप इसको पर्सनल प्रेफरेंस के बेसिस पर नहीं, कुछ प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल रीजंस की वजह से ही जो है वो ये डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ कर सकते हो। इससे हमें ये भी पता लगता है कि आर्टिकल 200 में ये वर्ड मेंशन किया गया है कि शैल का मतलब एक तरह से मैंडेटरी टोन दी गई है गवर्नर की इस एस्पेक्ट के ऊपर, कि उसको विदहोल्ड, अगर उसको रिटर्न करना है बिल तो जल्दी से जल्दी उसको रिटर्न करना पड़ता है स्टेट लेजिस्लेचर को। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में नाबम रेबिया जजमेंट में ये कहा था कि गवर्नर जो है वो इनडेफिनेटली नहीं विदहोल्ड कर सकते असेंट को, और उनको जो है वो टाइमली वापस करना पड़ेगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जो है ये केस गया है गवर्नर को एक क्या वो एक स्पेसिफिक टाइमलाइन देंगे या नहीं, क्योंकि पहले तो ऐसा कई बार हुआ है लेकिन सुप्रीम कोर्ट इससे बचता है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन या फिर टाइम लिमिट्स को प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ओनातुकारा सेसमे। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एफर्ट्स किए जा रहे हैं केरला स्टेट अथॉरिटीज़ द्वारा, ताकि ओनातुकारा सेसमे की जो है कल्टीवेशन को एक्सपैंड किया जा सके। तो ओनातुकारा सेसमे जो है वो केरला में कल्टीवेट किया जाता है। ये इसके ऑयल भी जो है वो बहुत फेमस है यूनिक हेल्थ बेनिफिट्स के लिए, और फ्री रेडिकल्स को फाइट करने में बहुत हेल्पफुल होता है ये। बॉडी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो 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 आपके फ्री रेडिकल्स बॉडी सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं उनको ये फाइट करता है। हाई कंटेंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैट की वजह से जो है ये हार्ट पेशेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहता है। विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें जो है हाई लेवल होता है, तो इसलिए जो है हार्ट पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। ऑलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, पैल्मिटॉलिक एसिड, ये सारी चीज़ें जो हैं गुड हेल्थ के लिए इसमें जो होती हैं। ठीक है, जीआई टैग आपको पता ही है, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फ्री मार्टिन्स। इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो जो फ्री मार्टिन्स होते हैं वो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, और फार्मर्स जनरली उनके फिजिकल या फिर बिहेवियरल ट्रेट से ऐसा पता लगा पाते हैं। तो अगर हम देखें तो ये फ्री मार्टिन्स वो कैटल हैं जो बोथ सेक्सेस का जो है वो एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो एग्जिबिट करते हैं। तो ये स्टेराइल फीमेल कैटल होता है जो कि एक मेल और फीमेल दोनों के ट्वाइनिंग की वजह से जो है ये बनता है। और ट्विन प्रेगनेंसीज में लगभग 90% में ऐसा केसेस में देखा गया है कि ये फ्री मार्टिन्स जो है वो एनिमल बन जाते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जब फीटसेस में अगर ब्लड एक्सचेंज हो जाए मेल और फीमेल के बीच में, तो ये जो है फ्री मार्टिन्स जो है एनिमल पैदा हो जाते हैं। ठीक है, और ये वाई क्रोमोसोम जो है मेल ट्विन का, ये फीमेल ट्विन के साथ मिलने की वजह से ही फ्री मार्टिनिज्म जो है एक कंसेप्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये फ्री मार्टिजन्स जो है ऑफ कोर्स ये रिप्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं। अब अगर हम क्रोमोसोम के बारे में देखें तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस ऑफ एनिमल और प्लांट सेल में आपको मिलता है। हर क्रोमोसोम जो है प्रोटीन और सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए से बना होता है। अगर ह्यूमंस की बात करें तो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब 44 क्रोमोसोम्स हर जो है वो ह्यूमन सेल में होते हैं। और इसके अलावा जो है वो एक पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स भी होते हैं, एक्स और वाई। मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, फीमेल में डबल एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सिटीज़ 2.0 चैलेंज। ये टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो और गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है उन्होंने सिटीज़ 2.0 चैलेंज जो है वो लॉन्च किया है। तो ये चैलेंज जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अलावा फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी, जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी, यूरोपियन यूनियन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स द्वारा सपोर्टेड है। इसमें क्या किया जाता है कि सर्कुलर इकोनॉमी को जो प्रोजेक्ट्स सपोर्ट कर रहे हैं उनको एक तरह से फंडिंग और उनको सपोर्ट दिया जाता है, खासकर इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी लेवल पर, क्लाइमेट ओरिएंटेड रिफॉर्म एक्शंस एट स्टेट लेवल पर, और नेशनल लेवल पर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग के लिए जो है हेल्प किया जाता है। 4 साल के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इन्वेस्टमेंट्स की जाएंगी अर्बन अर्बन क्लाइमेट एक्शन के ऊपर, क्लाइमेट सेंसिटिव प्लानिंग को फॉस्टर किया जाएगा, और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स को जो है वो नेशनल लेवल पर बढ़ाया जाएगा ताकि सर्कुलर इकोनॉमी को हम प्रमोट कर सकें। पहला कंपोनेंट फंडिंग का होता है। दूसरा कंपोनेंट में जितनी भी स्टेट्स और यूटीज एलिजिबल हैं उनको ऑन डिमांड बेसिस पर सपोर्ट दिया जाता है। तीसरे कंपोनेंट में तीनों लेवल पर इंटरवेंशंस की जाती है, सेंटर, स्टेट और सिटी लेवल पर, ताकि क्लाइमेट गवर्नेंस अर्बन इंडिया में प्रमोट की जा सके। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंदिरा गांधी पीस प्राइज़। आर्ट एंड कल्चर के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ जो है वो इस बार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को कोविड वॉरियर्स जो है उनको मिला है 2022 का। तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ 1986 से स्टार्ट किया गया है। 25 लाख रुपए इसमें अलॉन्ग विद अ साइटेशन मिलते हैं। इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने इंटरनेशनल पीस और डेवलपमेंट की तरफ वर्क किया है, या कुछ साइंटिफिक डिस्कवरीज, फ्रीडम और बेटर ह्यूमैनिटी की तरफ काम किया है, उनको ये प्राइज़ मिलता है। तो कुछ पास्ट रेसिपिएंट्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, आप उनको पढ़ सकते हो, जिसमें कि इसरो भी है एक। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्कैटर्ड स्पाइडर्स। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एफबीआई ने रिसेंटली वार्निंग इशू किया है ऑर्गेनाइजेशंस को एक हैकिंग ग्रुप के बारे में जिसका नाम है स्कैटर्ड स्पाइडर्स। तो बेसिकली ये एक हैकिंग ग्रुप है जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड को इन्वेड करता है, और कई तरह के इसके अलग अलग और भी नाम हैं। इसके जो मेंबर्स हैं वो 16 साल के लड़के या 16 साल के जो हैं वो 16 ईयर ओल्ड यंग
बॉयज़ एंड गर्ल्स भी हो सकते हैं, और प्राइमरीली ये इंग्लिश स्पीकर हैं, ठीक है। तो ये आईटी इन्वायरमेंट ऑफ विक्टिम्स में ये ब्रेक इन करते हैं और जो है सारा डेटा चुरा लेते हैं और पेमेंट मांगते हैं, अगर ताकि वो उस डेटा को लीक ना करें, ठीक है। फेक प्रोफाइल्स और इम्पर्सनेशंस का इस्तेमाल करते हैं हैकर्स, जो है वो इंटरनल कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर भी जो है वो ध्यान रखते हैं और उसके बाद ही जो है वो अटैक करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपना ऑफलाइन बैकअप जो है वो तैयार रखना चाहिए, क्योंकि जो है अगर आपको ऐसे ऐसे किसी अटैक से बचना हो तो आप उसमें अपने बैकअप्स को हमेशा ऑफलाइन भी तैयार रखा कीजिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट्स। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है एक प्रपोजल जो था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथी प्रोग्राम का, उसके कुछ प्रोजेक्ट्स को कैंसिल करने की वजह से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कुछ फेयर आ गया है। तो साथी इनिशिएटिव बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक इनिशिएटिव है जिसमें रिसर्च और टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को बूस्ट किया जाने का ये ऑब्जेक्टिव है। इसमें एक शेयर्ड प्रोफेशनली मैनेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बनाई जाएगी, जिसको जितने भी अकेडमिया, स्टार्टअप्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इंडस्ट्रीज़ और R&D लैब्स हैं उनको एक्सेस दिया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मोटिव ये है कि एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ का एक्सेस दिया जा सके इंडिया के जो है अकेडमिया को, स्टार्टअप्स को, इंडस्ट्रीज़ को, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, ताकि इसका बेस्ट यूज़ किया जा सके जो भी एडवांस्ड फैसिलिटीज़ हैं, और इसका इस्तेमाल साइंस एंड टेक की ग्रोथ में कंट्री में जो है वो कंट्रीब्यूट कर सके। तो इसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि वो 4 साल तक 60 करोड़ तक का मैक्सिमम इसमें जो है वो कंट्रीब्यूशन देंगे, ओके। और ये 4 साल के लिए जो है ये प्रोजेक्ट अगले चलाए जाने वाला है, ओके। So now let us see all these topics in English. So the first topic is Pradhan Mantri Mudra Yojana. So this topic is important for your governance and economy section. So Union Finance Minister has recently said that women entrepreneurs are being accorded the first priority under the Mudra Yojana, and she has said that 60% of the loans which have been provided under the scheme have gone to women entrepreneurs. So Pradhan Mantri Mudra Yojana basically is meant for the micro, small, and medium enterprises who often find it difficult to avail loans from banks via traditional borrowing channels because of lack of security and inadequate funds for paying off high interest rates. So, as a countermeasure, Government of India launched this scheme in 2015, and the scheme aims to provide loans up to 10 lakh to these non-corporate, non-farm, small and micro enterprises. And the banks, NBFCs, and microfinance institutions provide funding to these non-corporate small business sector. Okay. So what kind of loans are there? So Shishu loans are there, which are up to 50,000 rupees. Kishore loans cover amount up to Kishore loans cover amount between 50,000 to 5 lakh rupees. Then Tarun loans cover an amount between 5 lakh to 10 lakh rupees. So there are monitoring agencies at the state level which are called the SLBC forum. Then at the national level, Department of Financial Services is monitoring this the implementation of this scheme. So any Indian citizen who has a business plan for a non-farm income generating activity and he or she has not been a defaulter to any bank or financial institution is eligible for availing this loan. There is no need of any collateral security. There is these loans are made available for setting up micro-sized enterprises anywhere in India. In case you default on the loan legally because of certain unforeseen circumstances, then in that case government would repay your loan, okay. And so basically quick capital is provided, and even women entrepreneurs are given special concessional benefits for the loans under this scheme. Flexible repayment schedules are there, okay, so that you do not get burdened. If we see the achievements of this scheme, then 40.82 crore loans have been sanctioned until now, worth 23.2 lakh crore rupees, okay. So the next topic is governor's right to withhold assent. This topic is important for your polity section. So Tamil Nadu's governor R.N. Ravi's recent decision to withhold assent to 10 pending bills has raised fresh concerns regarding the power of governor. Okay, so Articles 163 of Constitution deals with powers of governor, but specifically Article 200 deals with the issue of granting assent to bills. So when a bill is passed by the state legislature and it is presented to the governor, the governor has four options: either grant assent to that bill, then either withhold assent to that bill, return the bills for reconsideration, or reserve the bill for consideration of the president. So Article 200 has a
and has an ambiguous terminology where it says that governor may as soon as possible return the bill uh, for the reconsideration of the house. So what does this term as soon as possible mean? Because of this ambiguity, certain governors have taken the benefit of it and used their discretionary powers regarding that. Okay, so this ambiguity has been exploited time and again by several governors. So can a governor in practice actually sit on a bill forever? Of course, because of uh, this loophole, governors can actually paralyze the elected government because of this indefinite timeline. But of course, this discretion, as per the constitution, this discretion cannot be utilized arbitrarily. And the Article 200 also uses the word shall, which means that the constitutional makers intended to give a mandatory tone for the governor on this aspect. So Supreme Court also in 2016 ruling regarding in the Nabam Rabia case said that governor cannot withhold assent to a bill indefinitely. So now the Supreme Court has is hearing about these cases, and in the past also the Supreme Court has hesitated to give us a specific timeline for to the governor to exercise these constitutional powers. And let's see what happens in this case now. Okay, so the next topic is Onatukara sesame. This topic is important for your environment and your economy section. So efforts are being made by Kerala state authorities to expand the cultivation of GI tagged Onatukara sesame. So this is cultivated in the state of Kerala. And it is famous for its unique health benefits, like it helps fight free radicals which generally destroy body cells, and its high content of unsaturated fat makes it beneficial for heart patients also. So this sesame is grown in the region, in this region contains high level of vitamin E and antioxidants, and it also contains oleic acid, linoleic acid, palmitoleic acid, which helps in maintaining good health. Okay, so the next topic is free martins. This topic is important for your environment section. So in agricultural settings, free martins cannot reproduce, and farmers generally use physical or behavioral traits to identify these free martins. So free martins basically are those cattle which exhibit the characteristics of both sexes. Okay, so these are basically sterile female cattle which result from twining of a male and female chromosome, and it generally occurs when during twin pregnancies. So approximately in 90% of cases this has been observed. So this happens when there is exchange of blood between the male and female fetuses during gestation. So sharing of cells carrying the Y chromosome from the male twin with the female twin can be attributed to this free martinism. And free martins basically cannot reproduce. Okay, so what is a chromosome? It's a thread-like structure which is located inside the nucleus of an animal or plant cell, and each chromosome is made up of protein and single molecule of DNA. And if we look at in human cells, then we have 22 pairs of chromosome in each cell, and we have also this pair of sex chromosomes called X and Y. The all biological males have X and Y chromosome, and all biological females have two X chromosomes. So the next topic is Cities 2.0 challenge. This topic is important for your governance section and also your environment section. So recently, Union Minister of Housing and Urban Affairs has launched the Cities 2.0 challenge, which is being conceived by Ministry of Housing and Urban Affairs, the French Development Agency, the German Development Agency, and the European Union, along with the National Institute of Urban Affairs. The program basically aims to support the selected projects who are promoting a circular economy, like with that of integrated waste management at city level, climate oriented reform actions at state level, and institutional strengthening and knowledge dissemination at the national level. So this program will be running for 4 years until 2027, and the aim is to drive investments into urban climate action, foster climate sensitive planning, build institutional mechanisms, and leverage partnerships amongst the urban local bodies in India. So it has three components. The first component talks about the financial support for such developing projects, and the second component talks about the states or UTs will be eligible, basically all states and UTs which will be eligible for support on demand basis. And then at the third level, it talks about interventions at all the three levels of government: center, state, and city. Okay, to further climate governance in urban India.
So the next topic is Indira Gandhi Peace Prize. This topic is important for art and culture section. So recently, Indira Gandhi Peace Prize has been given jointly to the Indian Medical Association and Trained Nurses Association of India, because they are considered as the representatives of COVID warriors in the country. So this prize was named after the former Prime Minister of India in her name in 1986, and it consists of a monetary award of 25 lakh rupees along with a citation. This award is given to individuals or organizations who have worked towards ensuring international peace and development, ensuring scientific discoveries are used for freedom and better humanity, and creating a new international economic order. So this is the list of certain past recipients, which also include ISRO, who was awarded this prize in 2014. So the next topic is scattered spiders. This topic is important for your security section. So FBI has recently issued a warning to organizations regarding a hacking group called scattered spiders. So this is a hacking group which is known for its uh, invasion in several organizations across the world. It is known by many other names also. Okay, so the members of this group are as young as 16 years old, and they are primarily English speakers. So they generally break into the IT environments of victims, and then they exfiltrate as much valuable data as possible. Then they demand payment to keep a lid on that information and not to leak or sell it later. Okay, so they use fake profiles and impersonations, and they keep an eye on internal communication channels also to gain access to the information. Okay, so how do you stay safe? So there are certain tips, like you should be maintaining offline backups of your data, use longer passwords, use phishing resistant multi-factor authentication, disable hyperlinks in emails, and keep your data encrypted. So the next topic is sophisticated analytical and technical help institutes. Sathi, this topic is important for your science and tech section. So central government's move to cancel a call for proposals under the Department of Science and Technology Sathi program has sparked certain fears among higher educational institutions. So what is this Sathi program? It's an initiative of Department of Science and Technology to boost access to research and testing facilities and address the problems of accessibility, maintenance, duplication of expensive equipment in institutions, etc. So the aim is to have a shared, professionally managed science and technology infrastructure facility, which will be readily accessible for all academia, startups, manufacturing units, industries, and R&D labs. So these centers will be equipped with major analytical instruments and advanced manufacturing facilities, and these will be guided. This facility will be guided by the basic principle of maximum and effective utilization and accessibility for all. Okay. So Department of Science and Technology would be funding up to 60 crore rupees for 4 years for acquiring these state of the art national facilities, and the duration of the support for this project will be a period of not will be for a period not exceeding 4 years. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.